Hello friends, welcome to Legends of Educational Knowledge YouTube channel. I am Mahesh Notyal. Today we will study the adjectives and its kinds. So let's start. What is adjective? Adjective यानी विशेषण. An adjective is a word that used to describe or modify the nouns or pronouns. विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है. फॉर एग्जाम्पल, द रेड फ्लावर्स इन माई गार्डन आर प्रेटी. एन इजी क्वेश्चन वाज इन माई क्वेश्चन पेपर. पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव्स. ए. व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन, इट इज नॉर्मली प्लेस्ड बिफोर द नाउन. जब एडजेक्टिव वाक्य में किसी नाउन का वर्णन करता है तो यह अक्सर नाउन से पहले प्रयुक्त किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एन इजी क्वेश्चन, अ न्यू डिजाइन, एन ऑनेस्ट बॉय. बी. बट समटाइम्स एन एडजेक्टिव में बी प्लेस्ड आफ्टर द नाउन. लेकिन कभी कभी एडजेक्टिव नाउन के बाद भी प्रयुक्त होता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस क्वेश्चन इज इजी, दैट बिल्डिंग इज ओल्ड, दिस बॉय इज वेरी सिंसियर. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव यानी विशेषण के प्रकार. एडजेक्टिव्स आर ऑफ 8 काइंड्स. फर्स्ट, प्रॉपर एडजेक्टिव. सेकंड, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. थर्ड, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. फोर्थ, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव. फिफ्थ, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सिक्स्थ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. सेवंथ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. एट्थ, possessive adjective. Now description for all adjectives. First, proper adjective यानी व्यक्तिवाचक विशेषण. An adjective derived from a proper noun is called a proper adjective. वह विशेषण जो किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता बताता है व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है. For example, the Indian Constitution is the longest written constitution. The Japanese have the highest life. सेकंड, क्वालिटेटिव या डेस्क्रिप्टिव या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी गुणवाचक विशेषण. एन एडजेक्टिव डेस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड अ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. वह विशेषण जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताता है गुणवाचक विशेषण कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, अशोक was a great king. Our school is famous. थर्ड, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी मात्रात्मक विशेषण. एन एडजेक्टिव स्पेसिफाइज द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. वह विशेषण जो किसी वस्तु की मात्रा के विषय में बताता है मात्रात्मक विशेषण कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव मी सम मिल्क. We need some water also. फोर्थ, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव यानी संख्यावाचक विशेषण. एन एडजेक्टिव टेल्स हाउ मेनी persons और थिंग्स आर meant इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एडजेक्टिव. वह विशेषण जो व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध कराता है संख्यावाचक विशेषण कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, 50 students are in the class. He can speak several languages. Numerical adjective also divides in 2 parts. A. Cardinal or definite number. For example, 1, 3, 4, 7, 100, etc. B. Ordinal or indefinite number. For example, all, few, some, many, any, several, etc. 5. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण. एन एडजेक्टिव इज यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग्स इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. वह विशेषण जो किसी नाउन की ओर संकेत करे संकेतवाचक विशेषण कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस इज माइन. दोज स्वीट्स आर डिलीशियस. सिक्स्थ, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण. एन एडजेक्टिव विच आस्क ए क्वेश्चन
is called an interrogative adjective. For example, which fruit do you like? What time is it? Note: the noun should be just after the which, what or whose. 7th, distributive adjective यानी विभाग सूचक विशेषण. An adjective which indicate the group of a person or thing is called distributive adjective. वह विशेषण जिससे किसी जाति या वर्ग की प्रत्येक वस्तु प्रकट होती है विभाग सूचक विशेषण कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय विल प्ले क्रिकेट. एवरी गर्ल कैन सिंग अ सॉन्ग. 8th, पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी संबंधवाचक विशेषण. एन एडजेक्टिव विच शोज पोजेशन और बिलोंगिंग इज कॉल्ड अ पॉजेसिव एडजेक्टिव. वह विशेषण जिससे अधिकार या संबंध का भाव प्रकट होता है संबंधवाचक विशेषण कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, योर ड्रेसेस आर एलिगेंट. आवर कार नीड्स रिपेयर्स. वी वेंट टू हिज हाउस. सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर एडजेक्टिव्स. Examples for proper adjective: an intelligent boy, an honest boy, a polite girl, a tall man, noisy baby, large garden, empty room, beautiful city, hot weather, expensive watch. Examples for qualitative adjective: the students of my class are intelligent. This is my very expensive watch. My friend is an honest boy. My brother is a polite boy. This is a big building. This is a tall boy. This new novel is interesting. The pickle is so sour. My sister is a beautiful girl. You look hungry. Examples for quantitative adjective: this is enough juice for my breakfast. Little water is needed to make the tea. I don't have any chocolate in my bag. I have sufficient money for shopping. Most people are poor in the world. She has many pens in her bag. He ate half of my burger. The fourth boy became first in the race. Please give me some water. Examples for numerical adjective: one bird is sitting in the tree. 4 cows are grazing the grass. 100 students are in this class. All birds have flown away. Few drops of medicine left in the syringe. Many friends helped him. Anyone can take this book. He can speak several languages. Some players are playing in the field. Some milk has left in this bucket. Examples for demonstrative adjective: this book is my favorite. These dogs live here. Who bought these earrings? Look at those dolls. These chips are too spicy. Look at that flower. That new bike is mine. How much are these pens? How is the cost of this LED? This watch is made up of silver. Examples for interrogative adjective: whose book was that? Which pen do you like more? What books are you buying today? Which bat is Watson's? What recipe did you like most? Which team scored the higher in the last match? Which phone do you like most? Whose pants did you wear? Which player did get a 50 yesterday? Which one is the new doll in this room? Examples for distributive adjective: every seat was taken. Leap year falls in every 4th year. Each boy must take his turn. Each of my friends went to different colleges. Each of them are very intelligent. He used to call me every day.
She watches TV every day. I write articles every day. She combs her hair every day. Do you have any money? Examples for possessive adjective. My computer is not working nowadays. Our father told us not to quarrel with anyone. Your cycle has been stolen yesterday. Your child is not doing well in the school. We are concerned about his performance. The students of class 7 submitted their assignment. I could not understand her intentions. Her thoughts are too complex. My mind stops working when I think about that. Our car needs repair. It's enough for today. यदि वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। धन्यवाद।